মুদিময় হৈ পৰিল বৰপেটা হোজাই। বৰপেটা হোজাইৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত জনসমুদ্ৰ। মৰাণত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শক্তি প্ৰদৰ্শন বিজেপিৰ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰে চমক সৃষ্টি বিজেপিৰ। সোমবাৰে বৰপেটা হোজাই আৰু মৰাণত তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বৰপেটা ৰোড ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত বিশাল জনসভাত আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। মোদীৰ ফটো অংকন কৰি জনসভাত একাংশ শিশু। সভাৰ আৰম্ভণিতেই শিশুসকলৰ হাতৰ পৰা সেই চিত্ৰকেইখন গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। হাতত কষ্ট পাব বুলি নিৰাপত্তাৰক্ষীক চিত্ৰ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ মোদীৰ। ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में इतना चित्र लेकर के आई है, उसके हाथ दुख रहे हैं। उधर भी कुछ बच्चे चित्र लेकर के आए हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहता हूं कि उसको कलेक्ट कर ले, और अगर आपने पीछे अपना एड्रेस और नाम लिखा है तो मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अगर आपने पीछे अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मेरे एसपीजी के लोग आएंगे, सब कलेक्ट कर लेंगे। सारे लोग जो लाए कलेक्ट कर लीजिए। জনসভাত জনসমুদ্ৰৰ মাজত আটাইকেইগৰাকী এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ একেলগে পজ দিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমীয়াতে নিজৰ ভাষণৰ আৰম্ভণি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে বহাগ বিহুৰ ওলগ। নামনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। अप्रैल का ये महीना बोहाग बिहू के उत्सव का समय है। आप सभी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस बार बोहाग बिहू के साथ साथ लोकतंत्र का भी उत्सव है, और मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो जोश में पूरे असम में देख रहा हूं, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये जो जनता जनार्दन दूर दूर वहां रोड पर भी खड़े रहने की जगह नहीं है, ये मैदान भर चुका है। मैं गुजरात में सालों तक काम किया है। अगर मुझे सुबह 10-11 बजे मीटिंग करनी हो तो मैं इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता था। অসমীয়াত নামনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা মোদীৰ। জনসভাত কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা মোদীৰ। কৃষকৰ সমস্যা, অসমৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যা আদি বিষয়ক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কংগ্ৰেছে মোদীৰ লগতে গালি পাৰে সেনাৰ শৌৰ্যকো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছ নেতাৰ পাকিস্তান প্ৰীতি থকাৰ অভিযোগেৰে সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी
हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। বৰপেটা ৰোডত বৰপেটা জিলা বঙাইগাঁও জিলাৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল হোজাইত। হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত হোজাই জিলা, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সকলোকে অসমীয়াতে নমস্কাৰ, জুঠাই আৰু কাৰ্ডম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। অসমীয়াতে সকলোৰে খবৰ সুধিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সকলোকে নমস্কাৰ, জুঠাই, কাৰ্ডম, কি খবৰ আপোন লোক চবৰ? ভালে আছে নে? সকলো প্ৰাৰ্থীক জনতাৰ মাজত মঞ্চৰ পৰা চিনাকি কৰোৱাই দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অসমত ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ বিজয়ৰ দিশে বিজেপি আৰু এনডিএ। হোজাই हो, ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलांग हो, डीमा हसाओ हो, आप हर क्षेत्र की एनर्जी लेकर आज इस मैदान में पहुंचे हैं। ऐसा माहौल, ऐसा मूड ये दिखाता है कि असम इस बार बीजेपी एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी विजय दिलाना तय कर चुका है। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত দিলে আকৌ এবাৰ এনডিএ চৰকাৰৰ ধ্বনি। আকৌ এবাৰ এনডিএ চৰকাৰ। নাম নোলোৱাকৈয়ে গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। দিল্লীত এটা শ্বাহী পৰিয়াল আছে, অসমতো আছে দিল্লীৰ নিচিনা এটা পৰিয়াল। কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালতান্ত্ৰিক ৰাজনীতিক সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছৰ শ্লোগান পৰিয়াল প্ৰথম, কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। क्या नारा है उनका? क्या नारा है? फैमिली फर्स्ट। बस अपने परिवार के लिए सब कुछ करो। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। হোজাইৰ জনসভা সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল মৰাণত। মৰাণত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পেলালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মৰাণতো মোদীৰ সভাত দেখা গ'ল জনসমুদ্ৰ। डिब्रूगढ़ में आने का अनेक बार मुझे अवसर मिला है, लेकिन इतना जोश, इतना उत्साह, ये अभूतपूर्व है। दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, वहां हाईवे पे शायद उनको सुनाई नहीं देता होगा, दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन लोग खड़े हैं। साथियों, कांग्रेस पहले से ही हैरान परेशान पड़ी हुई है। अब ऐसी तस्वीरें
कांग्रेस को वोट से ठीक पहले और पस्त कर देगी। ये जो उत्साह है वो एक ही गारंटी दे रहा है, आपको ये बार ब्यूरो रिपोर्ट, असम टॉक्स।